Hello everyone. Am I audible, guys? Yes, you are audible. Let's start. And जिन लोगों ने कल कोर्स किया था, I hope they will understand a lot of things that we will discuss today. ठीक है? Let me share my screen. भाई वो जो आपने जो प्रैक्टिकल बताया था ना कोर्स के बाद, हाँ, वो तो ऐसा लगा था कि पूरी मार्केट आप ही चला रहे हो। ऐसा नहीं है। अभी तुम देखो, तुम्हें भी लगेगा कि तुम एग्जैक्ट भी वो चला रहे हो कुछ दिनों बाद। नहीं, सच में ना वो मतलब वही मैंने बता रहा हूँ, जो आपने कैंडल पैटर्न बताया उसमें जो कैसे प्राइस जा रहा है उसको देखना है। अरे लग रहा था कि पूरा मार्केट जैसे हम भी लोग कतर बैठ के चला रहे हूँ, तो प्राइस भी वहीं जा रहा है एकदम। वही है, बस उतना ही समझना होता है। एक बार समझ गए तो सबको तुम्हें भी यही लगेगा तुम चला रहे हो। एनीवे, चलो, आज काफी कुछ ज्यादा समझ में आएगा इसीलिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ यूएस मार्केट। तो ये कौन सा ग्रुप का? हाँ, हेलो। अरे मैं बिजी हूँ ना, मैं एक बार फोन करके समझ में नहीं आ रहा है सर। उठाना हो तो पहली बार में उठाता, 10 बार कॉल नहीं करा। तो बताओ, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है? एनीवन, एनी आइडिया? तो जिन लोगों ने कोर्स किया है, कुछ तो बताओ कल यहाँ पे क्या करोगे सबसे पहले? नहीं सर, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, वहीं से नीचे तक गया, फिर वहां से थोड़ी बाइंग दिखी। तो अभी अभी भी स्टिल अभी भी सपोर्ट के ऊपर ही है। क्या मे करना बी चाहिए? साइडवेज मूवमेंट होगा। हाँ असल में भी ये तो सर वो देखा रेंज तो के बाहर अगर जाता है तब वी कैन टेक अ पोजीशन वेदर इट इज गोइंग अप और बिकॉज अभी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है कि इट्स अ ब्रेकआउट. So it is still within the range. So as you said that it will be sidewise, side for some time. And if there is another candle, then we can take call after Where that you will candle. put your buy and stop sell order? अगर तुम्हें बाई करना है, सेल करना है, where will you put that? 4100 पे सपोर्ट दिख रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट इट कैन गो भाई अगेन. सेल तो ये ना, जो वीकली कैंडल इसके नीचे जाएगा तो सेल सेल एग्जीक्यूट होगा। टारगेट हम लोग रखेंगे जो प्रीवियस डे का जो वीक का लो है। एक्चुअली सर, प्रीवियस कैंडल पे ऑलरेडी हम लोग एसएलएम ऑर्डर पे बाई अगर मतलब बाई ऑर्डर प्लेस कर चुके होंगे और वो एग्जीक्यूट भी हो गया होगा, और इट इज स्टिल अबव आवर एसएल। एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे सपोर्ट था तुम्हारा। अरे क्या, एक इंसान ने बस सही जवाब दिया है, इस रिवाइज करो। ये हमारा सपोर्ट एरिया था। ये पहला तुम्हें रिवर्सल मिला, 1 2 3 हो चुका है। उसके बाद तुमने क्या रखा होता है? एक एसएलएम ऑर्डर रखा होता है इसके ऊपर, जो कि एग्जीक्यूट हो गया होता है। यू वुड हैव ऑलरेडी बीन लॉन्ग। नाउ दिस कैंडल इज ऑल्सो ग्रीन, right? The moment it starts going up this, you'll see a good upward movement. तो यूएस मार्केट पे अभी व्यू क्या है? व्यू, यू वुड हैव ऑलरेडी बीन लॉन्ग। यूएस मार्केट पे अभी व्यू क्या रहेगा? लॉन्ग साइड। लास्ट वीक हमारा क्या था व्यू? लास्ट वीक यही तो बोला था कि जैसे ही इसके ऊपर जा लॉन्ग जाएंगे। इफ यू रिमेंबर, लास्ट वीक के वीडियो में यूएस पे व्यू पॉजिटिव था एंड इट वेंट अप, केम डाउन क्लोज हियर, बट स्टिल on a weekly chart your view remains on the upside. ओके, अब इसको अगर तुम डेली में देखोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ और दिखे, बट इसमें क्या दिख रहा है डेली में? जस्ट कि अपवर्ड मूवमेंट, कंसोलिडेशन। एंड द मोमेंट इट स्टार्ट्स गोइंग, यही है ना, अपवर्ड मूवमेंट है, कंसोलिडेशन हुआ है। नाउ इसके नीचे अगर जाता है, अब तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा?
इस पॉइंट के नीचे, इसके नीचे जाएगा तो you'll exit your trade. You must have entered somewhere here on this candle. The moment it goes below this, you'll exit. और जब तक इसके ऊपर है तब तक जैसे फ्लैग है of this breakout, right? Clear? बट सर इस ये करंट कैंडल के आगे क्या होगा, दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग, राइट? But you are already long ना, अब तो you just have to manage your trade. But if at all we are not long, if at all we have to just think, think about a new trade, whether we have to get into long or be short. Then अगर वो पॉइंट पे अगर हम बात करें तो we have to just wait wait for one green candle here. If there is a green candle over here, okay, say you are not in trade at all. So in that case, you will see that this is your trend line. Okay. If you see a green candle, it might just consolidate a bit. This might just consolidate a bit until here, and then you might see a breakout or further down move from there. नीचे आएगा, इसके नीचे जाता है, look to sell. ऊपर निकल जाता है इसके, look to buy. ठीक है, आया समझ में? सर हमने इसमें एंट्री किया था based on the weekly candle breakout, right? Yes. So sir, shouldn't our stop loss also be determined by the weekly candle? That is not necessary. It can also be by the daily. Yeah, but you trail and change your stop losses. You are getting new information. Last week you did not have 1, 2, 3, 4, 5 candles. Right. Now once you have more information, why you will keep there? Okay. The new information is telling you clearly that this is below, this is the support area. Right? 3 बार यहाँ आके तीनों बार ऊपर गया है. Right. So that means this becomes a good support area. And also you are seeing that this is a pole and this is a flag. अब उसमें या तो ये फ्लैग अगर वायलेट होगा तो इसके नीचे तुम निकल जाओगे if you are long. If you have not taken any trade, then just wait and watch. या तो फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा या फ्लैग के नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा. Right. Right? ठीक है. And this was something which I said कि volume 2 में will study swing trading and how to change between time frames and all those things, which was not part yesterday. But it's almost common sense. You actually don't need to. थोड़ा common sense use करो तो these things are pretty obvious. ठीक है. So on US market, देखो the view remains sideways until US market is between this zone. ऊपर ये नीचे ये, इसके बीच में जब तक है sideways view रहेगा. इन दोनों को जिस साइड में breakout मिलता है, and that will be your direction where you should take trade. Okay, so right now I'll put it on the sideways part. Then if you see Nasdaq, Nasdaq में क्या चल रहा है? Anyone? एक क्वेश्चन पूछना था. So every time we discuss about all the global cues and global indices, I'm not very sure. I personally never taken anything for that. So अगर कोई इसमें और chances है कि इसमें हम trade कर सकते हैं? No, you cannot trade in this. From India, you cannot trade. You're from India, नहीं. Not allowed. Okay, उसके लिए तुम्हें लाइसेंस चाहिए होता है ITMA, I guess. And ITMA का लाइसेंस के लिए you should have a bank balance of $8 billion. Wow. Okay. Anyway, out of question. तो अब इसमें क्या चल रहा है Nasdaq में? Anyone? बोलो, सही होगा या गलत होगा? Tell me your views. गलत होगा सीखोगे, सही होगा कंफर्मेशन होगा. इसमें भी like same situation है, like we are already long but this is a red candle instead of a green candle. So हम लोग बहुत tightly watch कर रहे होंगे इसको कि मतलब we are near the sell. एक सिग्नल है. तो देखो अब अब ये सब देखो, ये you should not be long. Why I'll tell you.
Let's open 5-minute chart. How I said you guys will enter. You will see that 5-minute candle जिसपे आपकी एंट्री होगी, राइट? यही तो बोलता हूँ ना मैं, 5-minute 10-minute कैंडल देखो जिसपे एंट्री होगी एंड उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखो. अगर तुमने वो यूज किया होता तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कब का हिट हो गया होता, यू वुड हैव एग्जिटेड. तो ये वीक स्टार्ट हुआ है कब तुम्हारा? मंडे 28 तारीख को ट्रेडिंग हुई होगी, राइट? 28 को जब तुम्हारा ट्रेडिंग हुआ होगा, यू विल नॉट बी लॉन्ग, यू वुड हैव लॉन्ग गॉन फ्रॉम दिस ट्रेड. सो यू वुड हैव टेकन एंट्री हियर जब ये क्रॉस हुआ प्रीवियस हाई, राइट? दिस वुड हैव बीन योर 5-minute कैंडल जहां पे तुमने लॉन्ग लिया होगा, है ना? इसके ऊपर मतलब ये रेड कैंडल पे ये तुम्हारा सिग्नल बार हुआ होगा, यहाँ तुमने एंट्री ली होती SLM ऑर्डर पर, राइट? क्लियर है? ये आ रहा है समझ? हाँ हाँ राइट? तो यहाँ पे तुमने एंट्री ली होती, उसके बाद मार्केट और तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होता, फिर यहाँ कहीं हुआ होता, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस. मार्केट गया, यहाँ गया, ऊपर ऊपर गया, इसने ऐसा पैटर्न बनाया, हियर यू शुड हैव एग्जिटेड. जहाँ पे आपको डबल टॉप पर रिवर्सल दिखा, इवन इफ यू वुड हैव नॉट एग्जिटेड, तुम्हारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, तुम यही निकल जाते. You would have not waited for this market to come here. If you are doing that, then you are being stupid. You are already you entered here, your stop loss is here. Why would you wait until Friday? Why? So here you would have not been long. If you would have gone long, you would have already exited either in profit or in loss. ट्रेल करते तो यहाँ प्रॉफिट में निकल जाते, ट्रेल नहीं किया तो छोटे से लॉस पे निकल जाते. नॉट दैट कि अभी भी तुम लॉन्ग ही हो. So if you are saying you are still long here, that is wrong. That means you are not managing your trade. आया समझ में? Yes, sir. Yeah, कोई डाउट है किसी को? That's why when you are using swing trading, it's very different. That another course will take for that. But अभी at least इतना तो समझ में आया ना how you have to do that. Cannot keep waiting for the whole week to end and see कि अच्छा week के end में decide करेंगे. Week के end में यहाँ तक आ जाता तो yes understood. yeah. So right now, what is the view on Nasdaq? And that was similar the case in US 500 also. See, we are doing our webinars weekly, but that doesn't mean कि पूरे हफ्ते trading नहीं हो रही. Trading तो हो ही रही है ना पूरे हफ्ते. जब पूरे हफ्ते ट्रेडिंग हो रही है, हर दिन नया टेक, नया बार, नया चार्ट आ रहा है, you should keep updating yourself. You have to keep trailing, and that's why risk management, trailing, all these things are more important. If you don't follow that, nothing will help you. So maybe it's like ये support zone के मतलब almost या फिर थोड़ा सा नीचे है, तो maybe this is the signal candle. इसके नीचे अगर जाता है तो we'll go short. Yes, exactly. See, this is clearly what is the first thing, what context. Our context is clearly downward movement, right? If you draw a trend line, and I'll not explain now every time in all the charts. Okay. This is clearly the context, downward, नीचे आ रहा है, there was a pullback, got sold off. You are at this, seeing this resistance come into play. This is dynamic resistance came into play. from वहां से बढ़िया good bear bar you have. What will be your trading strategy? This is your signal bar. You sell below this, right? The moment it goes below this, you sell on that 5-minute candle. Keep a stop loss. Then again, don't wait for week to end. Keep trailing. Okay, so on this the view will be negative. Okay, chalo, I will not explain all this so much. या तो टेक्निकल स्टॉप लॉस रखना है या फिर अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस रखना है. Yeah.
accordingly. Now this one, इस पे क्या चल रहा है? Same downward movement, इसके नीचे जाएगा तो sell करना है, but this candle is not a very good candle, this is doji. So it's still in sideways. Okay, that it might still be in sideways. You need additional proof. Okay, so Dow Jones will keep on sideways. जर्मनी में क्या चल रहा है? अब इसमें तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी जरूरत है क्या चल रहा है. Very clearly negative. Very good bar. Okay. The moment you see it going below this, you sell it. Clearly negative. Euro stocks, same story. No tension, sell. ठीक है, देखो, और यहाँ पे ये भी देख लो सपोर्ट है ना. अब यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम्हें एक सपोर्ट दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है, you sell it but be cautious because it might happen that the breakout fails like we discussed. ठीक है, फिर क्या हुआ? यूके स्टॉक्स देखो, very similar story, but what again you find here, there is a good support, so you should look for what? Failure of down move. If that at all there is a breakdown, you should look for failure. This again looks bearish, but my bias should be to look for failure and go long, right? Looks very bearish. इसके नीचे आता है तो sell करने का, but cause of the support I will also look for something like this. ऐसा कुछ कैंडल बन जाए. आ रहा है समझ? So 5 मिनट में अगर ट्रेड करते हो, you can catch a good down move and keep trailing. ठीक है, हिट होता है, exit and profit, ऊपर निकल जाता है, that's the moment you reverse it. ठीक है, Hang Seng again minimum ये तो जाएगा ही, clearly bearish in nature, context is also good. क्या करोगे? Sell है. चाइना इस कंसोलिडेट किया, उसके नीचे क्या है? ये तुम्हारा सिग्नल कैंडल था, राइट? ऑलरेडी यू शुड हैव बीन शॉर्ट हियर, क्लियरली शॉर्ट. निकेई क्लियर कट, ये तुम्हारा रेंज है, इस रेंज में इसके नीचे जाएगा, यू हैव टू बी शॉर्ट. स्टिल इट इज इन रेंज. दिस वीक इट डिड नथिंग बट फॉलोड द सेम रेंज, बट नाउ इन दिस वीक मोमेंट इट गोज बिलो दिस, गो शॉर्ट. डाउट है कहीं? So almost everything, all markets are going down. Even see, this is, I marked green because I am expecting there would be a reversal, but look, right now it also looks clearly bearish only. Yeah. So you'll have to see what happens at the breakout or breakdown, and accordingly you have to trade. ठीक है, डॉलर इंडेक्स देखते हैं क्या दिख रहा है इसमें अभी. Dollar index channel के high पे है, should be a sell, मतलब we should be looking to failure of breakout. Exactly, very correct. ठीक है, this channel is nothing what a dynamic consolidation zone, that's it. Normally flat होता है channel, मतलब dynamic, उसमें भी बस upper range है, lower range है. कोई breakout मिले, mostly you should look for opportunity to sell. तो looks like dollar कम जो move upward is done. Even if you see support resistance wise, goodest bit of resistance you see here, this is a supply zone, right? मतलब कि अगर कोई ब्रेकआउट आता है, वेरी पॉसिबल कि इस रेंज में जाए, बढ़िया सा विक बना के रिवर्स हो जाए. तो डॉलर माइट गो अप, ओके, देयर माइट बी a breakout, but eventually it almost looks like the move is done and it should not fall. Now if it closes above this, that's a different story, so that we will know. So if you see a breakout, what you should do on a 5, since we are using weekly chart, 5 minute candle, you can obviously go long, but with a stop loss, keep trailing. The moment it reverses, comes down, then you should look for a good reversal trade at least to the bottom of this channel line. ठीक है, So although we are expecting the last leg of fall in equity market, so dollar should also last leg of a move in dollar, but the view for me now, the view remains negative on dollar. Okay, I will not, like, अगर मैंने buy नहीं किया, I will not look to buy here now. Now I'll be looking to sell.
ओके क्रूड में देखो क्लियर कट ब्रेकआउट लास्ट वीक डिस्कस कि इसके ऊपर जाएगा, बाई करना है, अगर सोचो यहाँ पे खरीदा होता अच्छा पैसा बनता, still you will remain long. I don't see any kind of resistance also near. So यहाँ पे clearly you can remain long above last week's high. ठीक है, अगर last week high के ऊपर जाता है you can go long. But at the same time एक और चीज कल हमने क्या डिस्कस किया था, volume वाला फॉल वो सॉरी मतलब लास्ट में ही ज्यादा बड़ा मूव जब भी आता है तो that's usually the last move, could be the last move. now you see there is not very abrupt volume is ठीक ठाक only, so this might very well be genuine, but at the same time it's a very big move and you are seeing after a very big move a good up move, so you have to be a bit cautious. ठीक है, because if a reversal comes from here it will be again be as fast as this up move. Okay, view remains bullish but you have to keep seeing what happens. Gold, like I said, जब तक ये line नहीं जाती तब तक you will not go long. Okay, line जाएगी then we'll go long. View on this like last week, this week भी bullish रहेगा. Worked very perfectly last week. देखो last week ये candle बनी थी, still we were long and we made good money. That's the value of price action. If you understand price action, you make really good money. ठीक है, ये भी समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट है? चलो अब सारे समझ में आएंगे. अब इसमें देखो JPY USD क्या हो रहा है यहाँ पे, एनीवन? देखो इतना बड़ा फॉल हुआ, नाउ काइंड ऑफ अ डबल बॉटम यू आर सीइंग, looks like a bottom formation is going in place. The moment you see a test of extreme, that's where you look to go long, right? It's already showing like the bottom formation is happening, right? Yeah. So now the moment you see a higher top, higher bottom formation, you should look to enter on that second high. You can even enter here, but that will not be safe. The moment you see higher high, higher bottom, you know now is the time to enter. And if it crosses this, clearly bullish it becomes. Okay, so view will be here also on bullish side. Okay, bullish to sideways. Euro USD क्या लग रहा है? सबसे पहले कंटेक्स्ट समझो, ये आपका डिमांड जोन है जगह अभी. रिसेंटली क्या है? बेयरिश, इसके नीचे सेल, कंप्लीटली बेयरिश है. ठीक है. USD INR इसके ऊपर लास्ट वीक बोला था बाई करने को, नाउ डन. नाउ वेयर इट इज ऑलमोस्ट नियर द सप्लाई जोन, so now you should look to sell. Looks bullish, can go up, but your idea should be to sell. Yeah, GBP USD down move, consolidation down, ठीक है. This is the area of support, has breached it, बढ़िया movement है. इसके नीचे अगर जाता है तो you cannot sell because you also have a support here. So where you should actually look to sell only below this. Context is important. इसके नीचे आता है then only you sell. जब तक यहाँ तक रहता you do have to do nothing. ठीक है. So इसमें भी व्यू रहेगा नेगेटिव, but with the condition कि only you will sell below this. Clear? देखो कितना इजी है. So overall market क्या है? Overall market में क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? साइडवेज टू नेगेटिव. ओवरऑल मार्केट में ये चल रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे माइट बी बैड बट एंड ऑफ द वीक माइट बी गुड. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, फर्स्ट 2-3 days might still be negative, but
it looks like the bottom, if not already made, is very close to be made. Okay. Now last legs are really fierce, fast. So you can see big down moves. And similarly, you will see good recovery. So end of the day, end of the week, you will see mostly either the bottom has already been made. Okay. Or already abhi ya to ban gaya ya end of the week tak ban jayega. So if you are taking any new shots, it should only be something which you are looking to trade for maybe a day or two, not more than that. Okay, you have to trade tightly. Okay, you cannot leave your shots aram se. You have to trade them tightly, and the moment your trading sells right, you should exit and then start looking for reversal trades. Okay, also what does it mean? That if you see any major dip, look to buy. Look to buy. If not trading, look to buy stocks for your portfolio. ठीक है? Clear? Any doubt? No. हाँ? धीरे धीरे प्रो हो जाओगे आप लोग, टेंशन मत लो। अब देखो निफ्टी में क्या चल रहा। निफ्टी में देखो 16,100 टारगेट था हमारा, ऑलरेडी हो चुका है वो। एक कहाँ तक आया था? लोअर 16,133, दैट इज डन। ओके, लोअर साइड में यू गाइस सी दैट यस देयर इज अ support somewhere here, right? This is the area of support. Right now it is bearish. A B C wave चल रहा है, might be fast and fierce. Okay, C में भी A B C चल रहा है, so again might be fast and fierce. So the idea should be to look for selling below this last week's low. Last week low के नीचे अगर जाता है, look to sell. Where you will look to keep your target. पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, इस फ्लैग का टॉप। ओके, और दूसरा टारगेट इसी फ्लैग का बॉटम। ठीक है, दीज आर योर टू टारगेट्स। सो निफ्टी विल बी करेंटली अ सेल। आया समझ में? बैंक निफ्टी अगेन वेरी सिमिलर, क्लियरली बेरिश। दिस यू कैन विजुअलाइज एट व्हाट? स्मॉल डिमांड जोन। या इसके जस्ट नीचे अगर गया तो क्या करोगे? सेल करोगे। टारगेट क्या रखोगे? पहला दिस। थोड़ा मैं तेज भाग रहा हूँ क्योंकि आई एम assuming people are understanding. जिसको नहीं समझ में आ रहा है, still stop me and ask me. Okay, बैंक ठीक है। But seriously, like 32,000 is what we are expecting in Bank Nifty. Yeah, somewhere अगर around नीचे जाता है तो 32,400 के आसपास, 32,000, 32,400। ठीक है, so this would be your target area. This becomes your target area, right? 32,000 से 32,500, या और बड़ा अगर मानना है तो 31,500 से 32,500 इज योर टारगेट इफ इट गोज बिलो दिस। तो यहाँ पे फिर ट्रिगर लगा के रखो, हिट होता है, गो अहेड, बाय पुट ऑप्शन, सेल, व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड व्यू रिमेंस बेरिश। ठीक है, बाकी देखो फार्मा क्या चल रहा है फार्मा में। सर एक बैंक निफ्टी या निफ्टी को लेके क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बोला दैट व्हेन इट्स फॉलिंग अ लॉट द आइडिया शुड बी टू बाय, सो should we try to catch the bottom or what should be the strategy? Like stocks you buy, don't trade. I am pretty sure you can't trade. Okay, so you're saying stocks buy kar rahe for investment? Yeah, buy stocks. See, you should buy also for trading also, but the thing is you don't have capital, and the second thing is such things you can do only when you are doing things yourself and not depending on someone else, because these movements are fast and wild. Right. So you should look to buy if you think you have the confidence, if you can understand, then in that case you can also look to buy. Like for example, the moment it comes here, I will look to again. मैंने already खरीदा हुआ है April का future. If you guys remember, I told you I'm already there. I have already started to hedge it also. Yeah, the moment I reach here, what will I do? I'll book my profits in the short side जो hedge किया है, and then I'll add more on the long side.
But for that to do, I have capital first of all. Secondly, I have a strategy and I'll exit also if I'm proven wrong. But if you listen to someone and trade, problem क्या होता है, when you are wrong, you want someone else's advice कि क्या करना है, रखना है, Right. करना है, उस चक्कर में डूब जाती है नहीं है. तो इसलिए I am saying you guys go ahead and just start building your portfolio, don't trade. But yes, for any other trader professionally trading, 99% good traders would be looking to buy now, at least March, April or May futures. This is तो आपको what ऐसा someone क्यों लग should रहा है do. that we are close to the bottom? मतलब where even last week आपने सही बोला था that you bought Nifty and it was a good decision because I think आप Thursday को बोल रहे थे आप लेंगे, आपने लिखा भी था ग्रुप में. So even right now you feel we are close to the bottom. What's the reason for that, sir? This is very good support यार. देखो यहाँ से अगर नीचे जाता है, say this support is violated, just for example let's assume कि ये violate हो जाता है. Right. Okay, where will we stop then if this gets violated? Here. ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी में this is where you will come. What are these levels? These levels are March का level जब कोविड आया था. I don't think market में इतनी बड़ी क्राइसिस है कि we should revisit ये वाला level. If it comes again, you should buy. Okay, but I really don't feel कि इतनी बड़ी क्राइसिस है कि market will go to these levels. There has to be some fundamental thing. Now, why will people keep on selling? A big investor will start selling, then only you will see such falls, right? If FIIs continue to sell. Now, for me, it is hard to understand why will an FII or a big even domestic institutional investor, why will they not see a value here? They should see a value here. These values, when market is here, these are something like 2019 value. We are 3 years past. So what we are saying कि 3 साल में हमारी इकोनॉमी इतनी खराब है कि यहाँ पे भी we are not seeing any value. This is something which is not acceptable to me, and that's why I feel if bottom is already not made, it should be made. It's a bit of a fundamental discussion, but yeah, like we discussed yesterday in the class also, concept of fair price. I really feel that this is a very good fair price, and if it market comes here, I don't see a reason why investors will not lap it up. Why they will still sell? Because selling here is not giving a good risk reward. Selling here is not helping in terms of value also. It's a very good value if you get something here. Similarly Nifty में also, if you see इसके नीचे जाना मतलब you are coming here 13,500 level. So I really don't feel that will happen. That is the reason I feel your bottom is very close. Okay, and if the crisis increases, now see these things I am saying basis what is happening today. अब obviously कल को nuclear war हो जाता है तो this can come here also. It's a different story. But I don't think things will escalate until up to then, and that's why I don't think market will go down that much. Okay, it's almost near the bottom is what I feel. एक और चीज सर राइट नाउ वी आर इनटू मार्च, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद मार्च, सो अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग मार्च एंड देन क्लोज ऑफ बुक और उसके बाद में इंटरनेशनल जो भी प्रेशर है या उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स अपने साइड पे भी जो अभी होंगे उसका तो इम्पैक्ट आएगा. उसी का इम्पैक्ट है ना कि इतना सेलिंग हो रही है. पीपल हु वुड हैव बॉट लास्ट ईयर से ये अप्रैल 21 में इस लेवल के आसपास, राइट? यहाँ पे लोगों ने जो बाई किया होगा अप्रैल लास्ट ईयर. नाउ if market comes below this, actually they ended up making nothing in 1 year. Right. Returns are like zero, and that's why that is what I am talking about value कि एक साल में मार्केट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ गया. Actually people have made nothing, zero, right? So I don't think that will happen. They will not let it fall below this. Pretty sure about it. और sir, just जैसे since you talk about so much about Elliott wave, sir, just very basically आपके हिसाब से which wave are we right now? अगर आप निफ्टी का ये वीकली चार्ट में बता सके. वेव है ABC, वही उसी से तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि 16,100 आएगा. 16,100 आ गया. So we are in wave 4 क्या sir, in the larger uptrend, in the larger trend? This is whole is wave 1 2, wave 3 का wave 1 2 3 4 चल रहा है. ठीक है, this whole is wave 1, this whole is wave 3, wave 3 का, wave 1 का, wave
4 चल रहा है. Okay. तो सर तब तो wave 3 cannot be the smallest, and target तो फिर बहुत बड़ा है ऊपर का if it. हाँ, exactly. ये 1, 2, 3, 4 seems like is over. Then there will be 5. sorry please repeat. Wave 3 का wave 1 का wave 4 चल रहा है. Right here. This for me is wave 1, 2, 3 चल रहा है, ठीक है. और अब उस 3 में 1, 2, 3, 4, 5 something like this is what I'm expecting. ऐसा कुछ बन रहा है, and that is also one of the reason I don't expect this to fall further than this and come in the region of wave 1. ठीक है. Right. Yeah. Clear. Chalo. Anyway, now there are different ways to look at market. Now pharma में अगर देखो क्या चल रहा है pharma में, like we discussed last week, channel है, channel के नीचे वाले level पे you should look to buy any kind of reversal candle you see, you look to buy. So pharma, if there is a reversal candle, I look to buy. Similarly, at the same time, if it shows a breakdown of the channel, you should look to sell. इसके नीचे अगर जाता है तो sell, reversal आता है तो buy. View will remain bearish mostly, okay. But if you see a reversal candle, you should then buy, not sell. Metals, last week we discussed one of the sectors where we were bullish, performed really very well. Okay, now it has seen certain resistance again at the previous resistance. Now this is what concept of inertia we understood yesterday. Okay, something which worked earlier will work again. Exactly what it has happened. Metals went up as expected, faced resistance here, have come down. View still, remains bullish, but to take a new long, you should wait for this prior week high to go. अगर prior week high के ऊपर जाता है, in that case, you will buy. But new buys should not be done here, right here. Now you can use smaller time frame charts to time your entries, but as of now, and obviously the time frame you are using, you should look at the price action of that particular time frame. But on a weekly chart, on a swing trading point of view, now a new trade should be initiated only above last week's high. Yeah, but it still looks bullish. There is nothing wrong about metals. IT tight channel के नीचे buy, channel के ऊपर sell, same कहानी, sideways. Okay, the moment it is lower, buy, ऊपर sell. FMCG last week भी negative, अभी भी negative, इसके नीचे फिर जाता है, you have to sell. Okay, still the view remains negative. कोई support नहीं है, support सीधे आता है यहाँ पे. Reality again last week भी negative था, अभी भी negative रहेगा. Continue to stay short. ये हमारा trend line था, बहुत अच्छा. देखो यहाँ से आपको resistance मिला from the trend line. Clear cut short, you should already be short if you had not. Again, view remains negative. Finance very similar to Bank Nifty, negative. Clearly इसके नीचे जा रहा है, sell मारो. Media में क्या है? Negative है, but you have a support over here. You should sell only below last to last week low. Okay, only below last to last week low. You should sell, or on a smaller time frame, if you see a candle, signal candle, sell below that. Okay, so view will remain negative to sideways. I'll put it in sideways because still it is above it, and the candle is also green. Auto last week we discussed किया था negative, completed the target already. This was the zone. Already a target is done. Okay, below it again you should look to sell, but at the same time you should be cautious that you are very close to the support. So if you sell, you cannot take a new short position or a swing trade position. If at all you sell, you have to be cautious and keep trailing tightly so that if there is a reversal, you exit very quickly. Okay, but yeah, view remains still negative. Okay, so this might be 1-2 days negative, then it might show reversal. Clear on indices, guys? Any issue? Any doubt? No.
देखो कितना इजीली तुरंत तुरंत समझ लिया हमने। ठीक है, चलो स्टॉक भी कर लेते हैं, अब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक बार चीजें समझ लो ना तो इजी होता है समझाना भी। इसमें किसी को डाउट है? गुड, चलो अब स्टॉक्स में देखो। सर बट मोस्ट Yeah. ऑफ द मतलब मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में या फिर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डबल टॉप के जैसा दिख रहा है। इसे भी चेक कौन सा खुला है, HCL टेक है, इसमें भी डबल टॉप जैसा लग रहा है। इवन CNX ऑटो में भी डबल टॉप जैसा ही लग रहा था। डबल टॉप हो गया ना, तभी तो सेल किया था तुमने। ओके तो दिक्कत क्या है फिर? हम स्टार्ट ही फिर थे। यहाँ can't we expect मतलब बड़ा मूवमेंट फ्रॉम हियर टुवर्ड्स डाउन साइड? तो यहाँ सपोर्ट भी तो है, फिर यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉटम नहीं बन जाएगा तुम्हारा? एक बॉटम, दो बॉटम, तीन लाइक बॉटम। दैट। हाँ, तो HCL टेक गाइस देखो इसमें क्या चल रहा है, एनीवन एनी व्यू? देखो ये सपोर्ट था। आई थिंक एक काम करते हैं, इसमें कौन कौन था वेबिनार में? अभिषेक वाज देयर, राहुल वाज देयर, सिद्धांत वाज नॉट देयर आई गेस। सिद्धांत यू वर देयर इन द कोर्स? नहीं भैया। सिद्धांत वाज नॉट देयर, देन अभिषेक वाज मेरा देयर, ना सुनीता। स्टार्ट वन आवर स्टार्ट छूट गया था एक्चुअली, मेरा इश्यू आ गया था मेरे में, बाकी तब भी बता देंगे। कोई नहीं, अभी हम वीडियो रात तक अपलोड कर लेंगे। प्रतीक इज देयर, पांडे इज देयर, नजला, रौनक वाज नॉट देयर, सपनी वाज देयर। एक्चुअली स्पीक का मैं सोच रहा था ना, आप लोग खुद से करो, बताओ मुझे। एक्चुअली सबने किया नहीं कोर्स, ये दिक्कत है। सर HCL में अभी दिख रहा है कि एक रेड कैंडल जो बनी है बीच में, दैट वाज अ सिग्नल, बट लेटर ऑन वो एक छोटा No, that's not a signal. It's a doji. डोजी, So there is no signal. बट आफ्टर Not डोजी doji is not a good signal bar. And in fact, there is a double bottom from where it came up. If at all, you should look for a reversal trade on the upside. अपसाइड, ओके। So it's also a test of the extremes. Yeah, it's almost doing the same thing. This was the extreme. This candle actually tested the extreme. Nothing happened. It went closed up. So doji was a chance to take long. No, doji was not a chance to take long. Chance to take long will be above this. This is, you always take long on a green candle, short on a red. This is the इसका ये भी candle तो हो above सकता which. है कि इसकी रेंज छोटी होती जा रही है, जैसे मतलब ट्रेडिंग रेंज ही हो रही है, कंसोलिडेशन मान सकते हैं। इनसाइड कैंडल Context you see ना यार, पहले you see the context. The most important thing is context. Context is what? Context is that there is a good support which is acted. Yes. हर बाकी सब चीजें बाद में। So, but maybe we might prefer that this time we'll take long, not after going above the green candle, but going, if it goes above the red candle, then we might go long. Is it like that? I agree. No, you can go long above this. So immediately you are saying that जो current latest green candle है उसके ऊपर गया तो we have to go long. Yeah. Why will I wait for this? There is something called practicality also ना। फिर ऐसे तो सोचो, फिर इसके ऊपर जाओ, यहाँ भी एक सपोर्ट है, राइट? इतने सारे विक्स हैं। ऐसे तो ट्रेड हो ही नहीं सकता। Exactly. See, first thing you understand, मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक है प्रोबेबिलिटी और एक होता है रिस्क। जब आपका प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट का बढ़ता है तो आपका रिस्क जो होता है वो कम होता है, राइट? यस यस। जैसे ही आप, इट्स जस्ट सिमिलर टू ना, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट है, कोई रिस्क ही नहीं है तो उसमें रिटर्न भी कम है। ओके, सो द मोर प्रोबेबिलिटी यू थिंक अबाउट कि जहां पे आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो रिटर्न होगा वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आपका रिस्क ज्यादा होगा तो आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा अबाउट मेकिंग द प्रॉफिट, but your returns will be very high.
Now, what as a trader you have to do is find a balance between both. If you want to find a way where there is no risk, stop trading. There is no way you can make money without making or taking any kind of risk. Want that, go put your money in FD, leave it. So when you are trading, you have to find a balance, and that is more about common sense, cannot be taught. Yeah. So even if we look at this weekly chart and take a trade as per weekly chart, but we should decide our stop loss on a smaller time frame, like on a 5 minutes. तो वही ना, depend करता है ना, how much risk you are willing to take, how much return you are looking to make. Yeah, you can trail, like trailing, for example. If you trail very tightly, you might not make loss at all, but at the same time you might not make lots of money because your trailing stop loss might get hit very soon. So these things are about common sense, and it's about how you trade. Like nothing can be taught over there. And that's why I said you have to practice this. Practice, make your own rules. कब कितना करना है, क्या करना है. So for me, HCL Tech will be a buy above this. Goes below this, I will not do anything. Goes above this, will be a buy for me. Okay. Same Coforge देखो, last week ही बोला था buy करने को, already in buy, continue to remain long. Mindtree, again इसको भी last week बोला था buy करने को, double bottom तो इसलिए बोला था, बोल सकता हूँ last week नहीं समझा पा रहा था. ठीक है, still long, last week से ही long है, still will be long. Okay. In fact इसमें profit book करके इंसान को निकल जाना चाहिए था. ठीक है, to be very honest. But anyway, LTI very similar. Okay. LTI में हमारा last week क्या सीन था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट जाएगा. So that trade never got initiated. Now this is a signal candle to go long, and I will look to go long above last week's high. Okay. Last week हमारा इसमें शॉर्ट था, if you will remember, but वो ट्रिगर नहीं हुआ. Again Tech Mahindra में भी last week हमारा क्या था, शॉर्ट था, ट्रिगर नहीं हुआ. Now it's the time to go long. I look to go long over last week's high. IT is looking good. Showing almost bottom is already there. Very similar. Wipro long. नौकरी नथिंग, अभी छोड़ दो इसको. बट इसमें देखो लॉन्ग हो सकते हो क्योंकि ये लोअर रेंज है, अपर रेंज है. ओके, यू कैन actually go long on this, so look for some smaller time frame and you can actually look to go long, but right now leave it. Abhi it looks more like a sideways to up, not clearly any signal, so leave that. Not clear signal, leave it. Okay. Emphasis क्या लग रहा है इसमें? This is it's go long. Nups. Emphasis तो देखना सीखो. देखो जो मार्केट में दिख नहीं रहा है. This is the trend line, that is resistance. Okay, so if it makes a red candle, look to sell. If it makes a green candle, gives you a breakout, look for a second entry. So leave it as of now. Risky. LTDS. सर एक बार अगर आप एम्फेसिस का चार्ट खोलेंगे, जैसे वो if it goes above the trend line, so then as आपने कल भी बोला था, you have to look for the second entry, right? Yeah, because again if it goes above एक तो तुम्हारा risk reward बेकार हो गया. ये तुम्हारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, क्या ही करोगे ट्रेड लेके. सेकंड एंट्री में एटलीस्ट यू विल गेट अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड. करेक्ट. As a matter of practice also, sir, once it makes a trend line, should we always look at the second entry जो आपने depends ना, risk reward, what is the type of candle and all those things. ठीक है. Wait for volume 2, time आने दो. LTTS again, go long. Clearly nothing you have to do, go long above this.
TCS, leave it. Okay, it's just a range doji candle, nothing you have to do here, showing nothing. OFSS clearly bearish in nature. Okay, this is the trend line, clearly bearish. Support is also very low. Look to short. क्या हो गया भाई, कौन है? Look to short below this. Okay, look to go short below 3306, means not last week low, उसके पहले का वीक का जो लो है उसके नीचे, अराउंड 3300 के नीचे you should look to go short. Infi, again Infi is something you can go long but not a good risk reward solution. So now देखो टोटल में अब कैसे ट्रेडिंग करोगे, तुम्हें दिख रहा है मोस्ट ऑफ द आईटी इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट गिवन रिवर्सल. ठीक है, अब ओएफएसएस में नेगेटिव भी है लेकिन बाकी आईटी इज पॉजिटिव. दिस इज एन आउटलायर, लीव इट. लुक टू बी ऑन द लॉन्ग ट्रेड्स unless and until you have so much money that you can even take that risk, or you take this trade OFSS wala just the Nifty is weak, right? But the whole sector, if it is looking either positive or almost done, there one trade if you are seeing negative, ignore that. ठीक है, चलो मेटल्स देखते हैं. अब मेटल्स में देखो फॉर एग्जांपल वेदांता, one should, जब भी हम लॉन्ग हुए, one should have already booked profit. Okay, we would have went long here, somewhere here 365 के आसपास, went until 402, 35 रुपया. उसके बाद ये गिर के वापस 375 पे आ गया. Now still if someone is holding that trade, that person is stupid, can't do anything about that. Now for new long you have to take only about this. Okay, so right now on Vedanta I will not have any kind of view, we'll leave it. National Aluminium same, Coal India same. So Coal India in fact they go double top kind of thing. If I see a reversal I'll look to sell also. But as of now nothing, because candle is green, volume is good, leave it. Sale looks good for reversal, but again like you see there is a trend line here, can act as a resistance, leave it. NMDC nothing. Tata Steel expanding triangle. See, done the target. Now we'll have to see यहाँ से क्या होता है. ठीक है, if it reverses, look to sell for this target low of this. Okay, so we'll have to see. Mostly we should be looking to sell Tata Steel. Hindalco again same कहानी, ट्रेल नहीं किया तो I can't do anything, no new trade. तो इस वीक मेटल्स में हमें ट्रेड नहीं मिलेंगे, सब में वही कहानी है ऑलमोस्ट. APL Apollo, look to buy above last week high. This is the only trade you are getting in metals, a good trade. This is the only clear cut trade. Look to buy above last week's high. Rest metals there is no trade. जो ट्रेड था लास्ट वीक हो गया, पैसे बना लिए, you should have exited. Okay, that is the importance of trailing. If you don't trail, सिर्फ स्क्रीन पे पैसा दिखेगा, अकाउंट में कभी नहीं आएगा. ऑटो क्या है, सेल बिलो लास्ट वीक्स लो. भारत फोर्ज सेल बिलो लास्ट वीक्स लो. MRF leave it. Again it is a sell. Now एक और चीज याद रखो, इन सब में आपको एक दो दिन का सेल मिल सकता है, बाद में रिवर्सल भी आ सकता है, cause all of them are near the supports. Keep that in mind. So when you sell it, you have to be very careful that you keep trailing it. Again हम मतलब क्या ही बताया जाए, clearly sell, sell, and all of these were sell last week. So much money you could have made. Sell. देखो ये भी देखो सपोर्ट के पास है, you have to be careful.
सपोर्ट के पास है, बी केयरफुल, बट क्लियरली इट्स अ सेल. अगेन अ सेल until this चैनल में है. सेल सेल और बोला क्या है? सेल कर सकते हो इसको भी. रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट गुड, बट सो लीव दिस. सेल. Almost all auto stocks are sell. Almost all IT stocks are buy. Almost all metal stocks are avoid because they gave their movement last week only. Banks sell, sell, leave it, leave it, leave it. Again, leave it. Again, leave it. Banks may not getting much good opportunities. I think you are leaving all these because it might come down, but the reward is not that big. Exactly, yeah. This is also a sell. Yeah, most of them are sell, but yeah, मतलब बैंक निफ्टी में भी जब हम ऑलरेडी शॉर्ट है तो you know you have to be a little. बैंक बरोड़ा भी सेल. एयू बैंक. सो और ये सारे सेल कब है? लास्ट वीक लो के नीचे. ठीक है. एयू बैंक सेल. एसबीआई ने इसको भी सेल कर सकते हो, बट यही है रिस्क रिवॉर्ड वाइज. यू हैव टू सी 444 443 आपका टारगेट होगा, सो अकॉर्डिंगली. ठीक है. ऑलमोस्ट बैंक्स आर ऑल सेल. फार्मा सेल. लुपिन क्या होता है? सेल. सिप्ला नथिंग. When everything is in sell, that is the first indication of market looking to bottom out when everyone is selling. सर एक और जनरल क्वेश्चन था जो बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड राइट नाउ. सर जैसे can we also see that volume exhaustion? How do we get to know कि निफ्टी वॉल्यूम्स ऐसा हो रहा है when it is trapping all the shorts? जैसे अभी आप बोल रहे हो we are close to the bottom, तो ऐसा कुछ numbers होते हैं क्या जहां पर this volume is considered high for Nifty? नहीं, leave it. Leave volume part. Forget it. कल बताया ना, volume छोड़ दो. ठीक है सर. Just forget it. Volume and all. देखो ये रेंज था बायोकॉन का which we discussed. कि इसके नीचे जाए सेल, ऊपर जाए बाई. If you would have sold, you would have made tons of money. Still a clear cut sell below this. फॉलो करो वेबिनार. 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाना इन कैपिटल ऑफ 4-5 लाख इज नॉट डिफिकल्ट. नॉट एट ऑल. Just you need to follow, have trade plan and do some मेहनत yourself. यार गाइस मतलब लिटरली सब सेल है. मेरे को कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा. ये भी सेल, ये भी सेल, रैम को भी सेल. सब लास्ट वीक लो के नीचे सेल है. वर्जर सेल. क्या बताया जाए? बताओ. श्री सीमेंट सेल. डेविड ब्रिटानिया सेल. सेल.
Well, guys, अब इसमें सब में बस देख लेना ये support resistance. I'm not marking that. Go ahead and look at them and then find which one is better. Okay, as per risk reward and accordingly trade. This is also sell. सर एक और क्वेश्चन है, लास्ट वीक आपने अंबुजा का बहुत सही शॉर्ट कॉल दिया था. So sir, honestly, हिम्मत नहीं होता है to short futures in stocks. So then what is the other way of going about that trade? Can we sell intraday in cash, or should we buy a deep in the money put option, or what should we do? Find courage to do that. Practice and do. Practice it, you'll have confidence, you'll do that. Intraday cash में sell करोगे, you'll always have liquidity issue. There is a reason why people trade in FNO and why volume of FNO is high. If you don't trade in FNO, you always have the risk of liquidity. तुम्हें सेल करना होगा, तुम्हें बायर ही नहीं मिलेंगे, फायदा क्या? अच्छा, okay. When you trade in FNO, you have the luxury कि people are restricted to buy and sell a fixed quantity, which is the lot size. Right? So you know कि हाँ इतना एक लॉट तक 2 लॉट तो निकाल ही लोगे. Same अगर तुम कैश में खरीदो, it's not necessary there will be a buyer waiting for you to, you know, exit all your things at the same price that you want. So whatever price you might see on the chart on your trading screen, that is not the price you'll be able to sell it off, or that is not the profit you'll be able to book. ये just have सब sell है, मतलब आँख बंद करके sell करना है. Market is really bad here. That shows that it is almost nearing the end. Again, fell below last week's low, PBR. Leave it. Oh. Godrej property almost near the end of its down move. Sell below last to last week's low. Okay. Intraday में you can also sell below Friday's low. देखो ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट है, doji kind of a candle. You should always wait for second entry, not a very good breakout. Sell. गाइस ये काम करो, बाकी अब खुद करो. I think that would be better. थोड़ा खुद करो. Almost there is, I'm not seeing any kind of value in telling rest. ठीक है. Most of the things are sell, but just sit and do yourself and tell me some 2 to 3 stocks which you guys think are good. ठीक है. मेरे ऑलरेडी बहुत ट्रेड चल रहे हैं, मेरे को तो वैसे भी कोई नया ट्रेड लेना नहीं है इस वीक में. सर गुजरात गैस कहाँ गई? गुजरात गैस इधर कहीं है. कुछ गैस ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट. हाँ देखो, बस लास्ट वीक लो के नीचे नया सेल. ये भी सेल था, लास्ट वीक दिया था, ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट चल रहा है. तो ऑल दीज ट्रेड्स आर रनिंग. मेरे को भी नया कोई ट्रेड लेना नहीं है. ठीक है. So why don't you tell us 1 or 2 stocks for long term portfolio, अगर जो आपको अच्छे लग रहे हैं, which you are planning to add also. ICICI Bank. ICICI, okay. Yes, ICICI Bank, Stapler. उसके बाद तुम्हारा एंजल वन, वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम,
और क्या था? हम्म, एक और है यार, हाँ। सर व्हाट अबाउट दी एचडीएफसी बैंक, वो तो बहुत पिट गया है. मतलब भी खरीद सकते हो, बट आई डोंट फाइंड एनी मच वैल्यू इन दैट. देयर आर बेटर स्टॉक्स. An ICICI, it's easier for an ICICI bank to become an HDFC than for HDFC to do something else. So for me, I'll put my money in ICICI bank. It might double, triple. HDFC bank will not. Okay. इन इन्वेस्टमेंट में ये देखना है ना कि अब जैसे ब्रिटानिया हो गया, वेरी गुड स्टॉक, यू कैन गो एंड बाय इट, यू विल मेक मनी. या बट द थिंग इज कि ब्रिटानिया कितना ही ग्रो करेगा, इट्स ऑलरेडी बिग कंपनी. या हाँ वही बात हो रही है, वो टीसीएस वाली. हाँ वही, मतलब अब जैसे टीसीएस है, अब मैंने लास्ट ईयर जब मार्केट गिरा टीसीएस में मैंने इन्वेस्ट किया होता तो मेरे को उतना रिटर्न नहीं मिला, बट मैंने माइंडट्री में डाला, आई गॉट ऑलमोस्ट हाउ मच 3 or 4 times रिटर्न्स. सेम टीसीएस में डाला होता नहीं आता, राइट? तो मार्केट गिरा है तो आई विल लुक टू बाय स्टॉक्स व्हिच आई बिलीव विल बी 3-4 times rather than आई विल प्ले सेफ. और ये रिस्क रिवॉर्ड वाली बात है, कितना रिस्क ले सकते हो. इट्स देयर इज अ लेसर रिस्क इन बाइंग एन एचडीएफसी देन इन एन आईसीआईसीआई, बट सिमिलरली द रिवॉर्ड विल बी मोर इन एन आईसीआईसीआई देन एन एचडीएफसी. Hi, Ashutosh. This is Swapnil. So sorry, I got disconnected from meeting. No worries, no worries. Yeah, so I was just saying that last Friday it gives massive up and down. If you see a big candle on Friday. What you are saying? Which stock? Gujarat Gas. Uh-huh. So it is clearly showing as downturn, downwards. Yeah, it So is clearly downward. Yeah. But there is this is the support. That's why I said if no new long you have to take only below this. But right now it would be short only, right? I'm already short, so I'm not going to book it. I'm just gonna trail it. I trail it to this. I'm already trailed, already hedged also now. Because weekend है ना, तो weekend पे hedge करके ही मैं रखता हूँ. Monday को साले ये gap up यहाँ पे हो गया तो मेरा पूरा profit चला जाएगा. Oh, because it touches almost all-time low. Not all-time low, yes. But I mean this week's so. So काफी low गया था and then it reversed back upward. Yeah. So this is where you should have booked half or most of your position because this was the support. Like मेरे पास खुद ही 10 lot थे, मेरे पास 2 ही बचे हैं अभी. 2 reasons. One, almost this was a good support, so I booked it most of my portion, and then it is costing me less to hedge 2 positions rather than 10 positions. And weekend aa raha tha, I have to carry the risk, so I booked most of it, carried 2. I have hedged that too. Easier to do that. Yeah. Last week के नीचे जाएगा तो you will add more. इसके नीचे आएगा तो we'll add it. Okay. So how about Shriram Transfinance? Shriram Transport Finance सही दिख रहा है वो. Again इसमें भी ये देखो, ये तुम्हारा जो एरिया है. Again this is a place where one should have booked half of it. Okay, the moment it goes below this, target around this area opens up. You should keep booking, adding all those things. But उतना है नहीं अभी तो. 1-2 lot में जब trade कर रहे हो तो it's good. Keep targets like your lot size. Yeah. 1 lot मतलब 1.5 लाख रुपए में ट्रेड कर रहे हो, 2 लाख में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है. 1.5-2 लाख अगर तुम रिस्क पे लगा रहे हो, look for 5,000, 7,000, 8,000 and look to take more trades. एक में 10,000 बना निकलो, दूसरा देखो. 10,000 बनाना बहुत इजी है. लाइक मॉर्निंग में उठो, ट्रेड देखना स्टार्ट करो, 10,000 बनाना इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन मार्केट यू कैन डू एवरी डे.
Problem comes when you have big fund and you have to look at things. 5-6 लाख तुम्हारा फंड है and you have to trade. It's very easy. Be very clear कि हाँ मुझे 10,000 बनाना है. खोला, देखो स्टॉक 10,000 बना, ट्रेल करो 5,000 पे, आधा निकाल के रख लो. गिरेगा तो भी 5,000 आया, ऊपर गया तो तुम्हारा 10,000, 12,000, 15,000 जो भी. ठीक है. Anyway, practice guys. Like I taught you yesterday, do that practice, do it on stocks, do it on indices. Okay, and don't use volume chart. Don't, because these things will just distract you. It will stop you from taking good trades. अच्छा trade मिल रहा होगा, volume negligible होगा, छोड़ दोगे. So only look at price action, mark your support, resistance, trend line, all those things. Take trades like we discussed. ठीक है? एक छोटा क्वेश्चन है. So what is the criteria that you look for only for intraday? No criteria. 5 मिनट के चार्ट पे obviously वीडियो इंट्राडे. जैसे कि swing trade के लिए that we know that okay this is going to be there for a couple of days. This trade. You don't know it. You know it. Like I said, मैंने पहले ही बताया. I don't know when you have joined, but I take a trade. Every trade for me is a swing trade. I decide it basis. मैं ट्रेल कर रहा हूँ. मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेम डे हिट हो गया. I exit. अगर मान लो शाम तक वो चलता रहा, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, let me just pick a daily chart. Okay, let me pick a daily chart. Let me show you this trade. Okay. सर आपने जब अंबुजा का लिया तब अगर बताइए ना सर, दैट व्हाट वाज द रीजन फॉर इट. मैं बजाज का बताता हूँ. अच्छा ठीक है. ठीक है. अब जैसे बजाज का ट्रेड यहाँ पे मैंने लिया. ठीक है. जब मैंने बजाज का ट्रेड यहाँ पे लिया, इस क्लोजिंग दी इसने यहाँ पे ऑलरेडी गुड. अगर मान लो वो हिट हो गया होता, आई वुड हैव एग्जिटेड सेम डे. नहीं स्विंग होता क्योंकि अच्छी क्लोजिंग दी, आई कैरीड इट. नेक्स्ट डे भी अच्छी क्लोजिंग दी, स्टिल आई कैरीड इट. नेक्स्ट डे नीचे गया, क्लोजिंग ऐसी थी तो व्हाट आई डिड, आई बुक्ड हाफ. आई हैव ट्रेल्ड हाफ नाउ. बट मान लो अगर मैं सेम इसी दिन एंटर करता, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर से मैं फ्राइडे को शॉर्ट लेता, तो फ्राइडे को अगर शॉर्ट लेता तो आई वुडंट हैव कैरीड इट. आई वुड हैव बुक्ड इन द सेम डे एंड एग्जिटेड. इट वुडंट हैव बीन अ स्विंग ट्रेड फॉर मी देन. इट वुड हैव जस्ट बीन एन इंट्राडे ट्रेड. Since I took short here, I was able to make it a swing trade because it kept on giving me return. Never hit my sell. मैं ट्रेल करता रहा, वो चलता रहा. But this was the day finally जहाँ पे I was like, नहीं, I have to book some because of this candle. Still, it will go down. Pretty sure about it. But being sure and being stupid are two different things. I'm sure, but I'm not stupid. Okay, so in market, sure doesn't ever mean 100%. So I booked half. Actually 7 lot I have booked, 3 I have. 3 I have kept it to trail it to this high. I've hedged it. Okay, इसके ऊपर जाता है, बात खत्म. नीचे जाता है, this is a target I'll keep. Again I'll keep trailing. So every trade I take is a swing trade for me until my stop loss gets hit. Why will I exit? Because I believe in trailing. जितना मार्केट पैसा दे रहे उतना लेने का. ठीक है. ठीक है. Thanks. चलो guys, let's end it and do some analysis on your own and थोड़ा करो practice like we did yesterday. practice करो, थोड़ा practice करो. जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर होते जाओगे, उतनी ज्यादा समझ आती जाएगी कहाँ एंट्री एग्जिट करने हैं, क्योंकि उतने 10, 15, 20 तरीके के सिनेरियो आएंगे. So do that and let's see how this weekend goes. Let me know. This week was fantastic actually and the coming week should also be the same. Chalo guys, bye bye, take care. Yeah. Enjoy. Can you Yeah. can you please upload both the videos? Yeah, by 11 o'clock both will be there. Okay. Thanks. Yeah. Thank you.